Hello students, good evening to everyone. I welcome to all at Kuhu International Live Classes. Yes guys, today we are going to start the lecture number 4 of set theory. In this lecture I discuss the homework questions which is based on this is the exercise 1.2. Okay, then I discuss the subset and superset theory part. Okay, then on based questions. So first of all, your exercise 1.2. Yes, let's start with which of the following are example of null set? Null set, not null set, it means a set having no element is called null set, which is denoted by phi. This symbol is called phi. Okay, or this open. Okay, this is not a null set. This is a set containing the element phi, but this is not a null set. Okay, null set is represented by this only and this only. Yes guys, so first of all solve these lines. Yes, first questions read set of odd natural numbers are divisible by 2. Yes, it is possible or not? It is not possible. Odd number कभी 2 से divisible नहीं होते हैं. So its answer is let A, only phi, no element. Okay, next second questions, set of even prime number. Yes, even prime number is only 2. Okay, so this set is not a null set, it is null set. Okay, yes, next third, this is first and this is second. Okay, third, x is a natural number. What is natural number? 1 2 3 up to infinity, which is less than 5 and greater than 7 तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर बता दो मेरे को आज जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. एक कोई नेचुरल नंबर बता दो, एक भी कोई ऐसा हो तो आप सोचते रहो, ऐसा कोई है ही नहीं. सो दिस इज नल सेट. ओके, ये नल सेट है, ये भी है, ये नहीं था. फोर्थ, common point to any two parallel lines, line L1 and line L2. Common point, these lines are not intersecting, so no common point. So this set is also a null set. Okay, fourth is a null set. Yes, everybody to clear? Now next, second, which of the following set are finite? What is the finite set? A set having finite number of element. Okay, finite number of element, infinite number of element. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ. तो अपन यहीं पे लिखेंगे, इनको आंसर यहीं पे लिखना है. क्वेश्चन रीड करो, आंसर लिखो. यस, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल के मंथ को लिख सकते हैं अपन फाइनाइट में. ओके, तो दिस इज फाइनाइट सेट, नेक्स्ट 1 2 3 ...
this indicate this series is going to infinity, so this is infinite. Yes, infinite set. Okay, now yes, last value is given, so this is not an infinite, this is finite set. Last value given है finite set. The set of positive integers greater than 100, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, 101, 102 up to infinity, so this is infinite. Very simple. Yes. Last, the set of prime numbers less than 90, less than 90. Yes, this is finite or infinite. 2, 3, 5 up to 97. So last value is given. So this is finite. Okay guys, clear? Now next, question third. State whether each of the following set is finite. Same questions, finite and infinite. So first questions, the set of lines which are parallel to the x-axis. Parallel to the x-axis. This is x-axis and this is y-axis. So parallel to x-axis, बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ, बहुत सारी. This line is parallel to x-axis. This line parallel to x-axis, parallel to x-axis. Okay, so this set is infinite set. This set is infinite set. Second, yes guys, the set of letters in the English alphabet. Yes, सबको पता है English alphabet letters A, B up to Z. So this is finite set. Okay, clear हो रही ना ये चीज़ें? Simple है. Solution of third. The set of numbers which are multiple of 5. बहुत सारे बता सकता हूँ. Set of numbers multiple of 5, 5, 10, 15, 20 up to infinite. So this is infinite set. Okay guys, now next, तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. What is the finite set and gives 2 example. What is infinite set and give 2 example. Okay, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको. The set of animals living on the earth. Yes guys, this is very important. Fourth, the set of animals living on the earth. Question number 4. This fourth part is finite or infinite. सोचो क्या होगा आंसर, फाइनाइट और इनफाइनाइट. कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं इनफाइनाइट होगा, बट उनका आंसर रॉन्ग है. जिस तरह से पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से एनिमल्स को भी काउंट किया जा सकता है. हालांकि नंबर्स ज़्यादा होंगे बट काउंटेबल. ओके, एनिमल्स आर countable, so this is finite set. Okay, the set of circles passing through origin. This is finite or infinite? Infinite. कैसे देखो, origin, this is origin, this is circle pass through the point 0, 0, this circle, this circle, this circle, बहुत सारे. So infinite circles are passing through origin.
infinite set. Okay guys, now let's move on question number 4. Yes, in the following set, whether A or B it means equal set, equal set, equal set. Equal. So which of the following set are equal? State A, B, C, D. First statement A, B, C, D, D, C, B, A. Yes, equal set. The number of elements are same. Okay, number of elements are same, not elements are same, then known as equal set. A, B, C, D तो same element है, वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो this is equal set. 4, 8, 12, 16, 8, 4, yes, not a equal set. ओके 12 कहाँ है उसमें, तो इक्वल सेट नहीं है. ओके 2, 4, 6, 8, 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x लेस देन इक्वल टू 10. यस, लेस देन इक्वल टू 10. तो B also contain 2, 4, 6, 8, 10. Okay students, so this is equal set. Multiple of 10. Yes, A also contain 10. No. B contain 15, but 15 not exist in A. So these are not a equal set. Okay. Next, move on. Question number 5. Are the following pair of same questions equal set or not? Yes. First, A is equal to 2, 3 and B is equal to solution x square plus 5x plus 6 is equal to 0. So factor this equation, 2x plus 3x plus 6 is equal to 0. X common, x plus 2 plus 3, x plus 2. Yes guys, x plus 2, x plus 3. Now value of x equal to -2 and -3. So B containing these element only. Yes, A contain 2 and 3 and B contain -2 and -3. So these are not a equal set. So A and B are not equal set. Okay, next move on the second part. X is a letter. X is a letter of the word. Letter of the word follow F O L W. ओके, एक टाइम ही लिखते हैं, पता है ना, O रिपीट हो रहा है, L रिपीट हो रहा है, पर दो बार नहीं लिखेंगे उसको. एंड B also the letter in the word wall. W O L F. Yes guys, same element. So A and B are equal set. Okay, next. Yes, last question. From the sets given below, sets select equal set. Which are the equal set? Okay, so first, yes, 2, 4, 8, 12. 2, 4, 8, 12. 2, 4, 8, 12. कोई सा भी नहीं है. ओके, छोड़ो इसको, इसका कोई पेयर नहीं मिला. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4. यस, 3, 1, 4, 2. B and D are equal set. Now next 4, 8, 12, 14. तो इसका भी कोई पेयर नहीं है. नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट सेट. -1 and 1. Yes, so E and G are equal set. ये बच्चों जैसे क्वेश्चन है. ओके, और कुछ है और कुछ नहीं है. इसका कोई पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं है.
ओके, यस, आंसर है ये. नेक्स्ट, सबसेट एंड superset. What is subset? If all the element of A are belonging to an element in set B, then A is called subset of B. Every element of A is an element of B, then A is called subset of B, and B is called superset of A. B is called superset of A, and it is denoted by A subset of B. Yes, सबसेट. इस सिंबल का नाम क्या है? सबसेट. कैसे लिखना? देखो, ऐसे ऐसे बना लो और इस पे इक्वल. ओके, so this is a subset. Example 1, 2, 3, 4. So these elements are exist in also set B. So A subset of B. A subset of B. But A is not a subset of B, then we write A not subset of B. If देखो यहाँ पर जैसे A subset of B and every element of B is not exist in set A, so B is not subset of B, and it is denoted by this, like this, B not subset of A. ओके. अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यहाँ इक्वल साइन दिया है, यहाँ इक्वल साइन क्यों नहीं दिया है? तो ये अभी समझा दूंगा मैं. इक्वल इट मीन्स एग्जैक्ट हो. 1, 2, 3, 4 तो इक्वल आ जाता है, तो इक्वल यहाँ से हटा दिया गया है, एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल. ओके, नाउ नेक्स्ट, proper subset. Proper subset. A is subset of B, but A not equal to B. A not equal to B. Then A is called proper subset of B. We write A subset of B. Okay. Proper subset. Proper subset is denoted by A subset of B. Okay. और subset is denoted, या improper subset is denoted by this. Okay, A is not proper subset of A, so this is improper subset of B. Improper and proper. Okay, A equal to B है तो improper, otherwise proper subset. Okay, तो अभी अपन ने एग्जाम्पल जो देखा proper subset का है. A not equal to B, proper subset. Next, yes, इस एग्जाम्पल को अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे. अभी कुछ पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ये एग्जाम्पल. यस, इम्पोर्टेंट रिजल्ट. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको कहूँ A इक्वल टू 1, 2, तो इसका सबसेट क्या होगा? तो एक तो ये खुद ही हो गया, और बाकी कैसे होंगे वो अपन देखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये भी ध्यान रखना है. एक तो एम्प्टी और एक खुद. नल सेट एंड इटसेल्फ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट. थर्ड, A is subset of B and B is subset of A, then result is A equal to B. Okay. Phi is proper subset. Phi is proper subset of every set except itself. Phi के अलावा ये बाकी सबका proper subset होता है. Phi का proper subset phi नहीं होता है, but phi के अलावा बहुत सारे हैं जो उनका proper subset phi होता है. Okay. Okay, students. Next, the total number of subset of finite set containing an element is 2 power n. This is very important formula. If n of A is equal to n, then total number of subset
ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 पावर n। ओके, सो इनको अपन और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।